Now, the Supreme Court has overruled a 1967 verdict that held that the Aligarh Muslim University cannot be considered a minority institution as it is a central university. The Apex Court said that the case papers should be placed before the next Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, for setting up a fresh bench to decide the validity of the Allahabad High Court's 2006 verdict in the matter. As per Chief Justice D.Y. Chandrachud, right under Article 30 is not absolute, and that a religious community may establish an institution but may not administer it. Not just this, the CJI also pointed out that an institution merely incorporated by a statute cannot claim to be a minority institution. In February this year itself, the top court had considered the validity of a 1967 Supreme Court case which rejected AMU's minority status, as well as the 1981 amendment to the AMU Act that granted minority status. Pronouncing the verdict by a 4-3 majority, the seven-judge bench today also laid down tests for considering the issue of the minority status of the university. AMU में फ़िलहाल बिल्कुल शांति व्यवस्था है। लड़के आज पूरे दिन सारी क्लासेस हुई हैं, फैकल्टीज़ में जहां एग्ज़ाम थे वहां एग्ज़ाम भी हुए हैं। बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है, किसी भी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जब तक ये पूरे फैसले को आदमी पढ़ न ले तब तक अपनी राय कोई नहीं रखना चाहिए उसके बारे में। कैंपस में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। लोग कल से ही बहुत इंतजार कर रहे थे इस फैसले का, और अभी आगे और भी जश्न मनाया जाएगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये हमारा राइट था जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इसका दूरगामी परिणाम होगा। 1967 में अजीज बाशा का जो फैसला आया था, जिसने अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया था, उसे निरस्त करते हुए पुनः का स्टेटस बहाल किया। अभी फैसला चल रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर मीडिया के हवाले से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर अजीज बाशा का फैसला निरस्त हो गया तो पूर्व दर्जा कायम रहेगा माइनॉरिटी का। जो 3 जजेस की बेंच भी डिसाइड करेगी, वो भी इन 7 जजेस की जो बेंच का बहुसंख्यक का निर्णय है 4-3 का, उसका पालन करेंगे। The Supreme Court 7-judge Constitution bench has not adjudicated finally on the contentious issue whether the Aligarh Muslim University is a minority institution, but very significantly set aside the Azeez Basha judgment of 1967, wherein taking on account that it was an institution established merely on the basis of a statute. It cannot be given a minority status. That has been set aside. Now the 7-judge Constitution bench has laid down clear criteria, clear parameters like the history, why it was set up, why it was incorporated, why it was established, and who is administering it. All, in fact, expansive parameters have been laid down, and the matter has now been referred to a lesser 3-judge bench.